आप लाइव हैं। Good evening, everyone, all the viewers and the members who have joined us on the Zoom call today. Welcome all on behalf of WHRF, the Women's Health Research Foundation. It is working for the empowerment of women in the field of yoga, health, and other professional guidance. We are here connected with our study circle group, the Yoga Research Study Circle. Here we do research work and also do teachers training programs and other educational programs like quiz contest, and some other programs are also running, like for the MA students and BA students, and even the PhD programs are running under WHRF Research Circle. So today, our special guest speaker is Ms. Palak Bhasin Kapoorji, and Palka is a clinical psychologist with 15 years of work experience. She is also a lifestyle management expert and a master in hypnotherapy from California University, USA. She deals with emotional distress and utmost confidentiality and efficacy. She has also been an active participating member of the CBSE National Adolescence Education Program, catering her services globally. Palka's vision is to build a stigma-free society and make talk therapy a trend in India, making it available to whoever needs it. So Palka is not only helping with her clinical expertise, she is also personally attending to children, adolescents, youngsters, and even physically challenged children. And so we are here to hear her thoughts on how mental health can be controlled by yoga, how yoga therapies help one to keep a healthy mental and physical health. Over to Palka ji. Welcome, Palka ji. Thank you so much for the wonderful welcome. And hi friends, नमस्कार मित्रों. सबसे पहले मैं दिल से grateful हूँ WHRF Yoga Research Study Circle का. Thank you so much for this beautiful introduction. It is such a blessing to be able to give back to the society. Before I started my practice, I found that many times most people are ready to seek help, but are not or unable to find the right professional help. So I am grateful to WHRF for doing such informative series, contributing and spreading and connecting professionals together on a common platform. Huge applause for this beautiful platform. So आज का topic है Importance of Yoga and Mental Health. ये एक ऐसा संगम है जैसे एक तराजू के दो पल्ले. And now I'm going to start with the presentation. And here we go. Can you all see? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, Oh, it is visible. Great. Okay. So, like I said, the importance of yoga and mental health. ये एक ऐसा संगम है जैसे एक तराजू के दो पल्ले. It goes hand in hand. Mental health and yoga, it goes hand in hand, and it's a beautiful combination. But before I go further, I like to speak something on mental health. That what is mental health, or what is Dumpito? Dumpito is the name जैसे जहाँ पे mental health और holistic wellness platform है, और ये एक बहुत ही important platform है क्योंकि you can express yourself, you can express your feelings, you can express your emotions on this platform. And we all need one platform like this where we are not judged, where there is no biases, and we can dump all our worries. Therefore, the name Dumpito. We can dump our worries, we can dump our stress, we can dump our anxiety, we can dump our depression,
we can dump our problems in our relationship, we can dump problems in our work-life balance. We can dump it over here. A therapist is available. You can talk your heart out, and it is safe and confidential. So therefore, the name Dumpito. It is a mental health and a holistic wellness platform where you can just dump everything and go and be happy, and all your worries can remain here with us on this platform. It is very, very safe and a confidential platform. And our goal at Dumpito is to provide a meaningful experience to those who gather courage to speak. And speak what? About how they feel. आज भी हमारी सोसाइटी में फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ एक टैबू है, एक स्टिग्मा है. वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, अंदर रखते हैं. हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है, हम परेशान हैं अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, या ऐसी दिमाग में ख्यालात होते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते. लोग क्या कहेंगे? वी डोंट वांट टू गो एंड मीट अ थेरेपिस्ट. रिश्तेदार क्या कहेंगे? क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ? अरे हमने तो अपने जमाने में बहुत कुछ किया था. हम सुनते हैं ना अपने एल्डर्स से, या कि हमने तो कभी सब कुछ लाइफ में झेल लिया, आजकल की यंगस्टर्स नहीं झेल पा रही, या आजकल की जनरेशन नहीं झेल पा रही. Well, that was good, but we all need a platform to move ahead in life in the right manner, in the right direction. So therefore, it is very important. We all need to have a sound health over here. And we want people to come and express themselves freely, their thoughts freely, their behavior thought very, very freely without being judged. And to join and to make talk therapy a trend in India. That they can go to a place and talk about these issues without being judged. I can't do it alone, but together on this platform, and by letting other people know that such a place exists, we together can make talk therapy a trend in India, which is without any taboo and without any stigma. So like I already said, हम एक stigma free, taboo free society की तरफ बढ़ना चाहते हैं. एक जनरेशन बिल्ड करना चाहते हैं जो मेंटली वेल हो और मेंटली हेल्दी हो. Now, why is mental health important? जैसे हम सबकी एक फिजिकल हेल्थ होती है, we all have a physical body, तो हमारी फिजिकल हेल्थ है. वैसे we all have a mind. So mental health is also equally important. जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी में स्वस्थ रहने के लिए we eat, go for exercise, walk, जिम, और वी डू योगा, मेडिटेशन, वैसे ही अपने आप को मेंटली हमें फिट रखना बहुत जरूरत है. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस दीस डेज. देयर आर ब्रेन जिम्स, एक्सरसाइजेस एंड थेरेपी. इट हेल्प्स अस टू मेंटेन अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ. एंड हु डज नॉट लव पीस ऑफ माइंड? एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े और बूढ़े तक सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए. वी ऑल वांट टू बी सेन, है ना. जब पीस ऑफ माइंड होता है तो हम कितनी सारी चीजें कर पाते हैं, और जब पीस ऑफ माइंड नहीं होता, सो इट अफेक्ट्स आवर वर्क, इट अफेक्ट्स आवर फैमिली, इट अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप, इट अफेक्ट्स आवर फाइनेंस. एंड पीस ऑफ माइंड इज प्राइसलेस, माय फ्रेंड्स. So it's very, very important that we all have peace of mind. And how will we get that peace of mind? We can get that peace of mind जब हम शांत हो, where we can think in a more constructive manner. जो हमारे आसपास का जो environment है, जो वातावरण है, वो encouraging हो, जो motivating हो, जो negative ना हो, जो demotivating ना हो, जहाँ distress ना हो. Stress तो सभी की life में है. It is a part of life. लेकिन हम किस तरह से उससे डील करते हैं, वहां मेंटल हेल्थ इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. और थेरेपी हेल्प्स अस, गाइड्स अस, एंड इट साइको एजुकेट्स अस हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. बिकॉज in therapy it is very important. The way you think is the way you feel, is the way you behave. आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही महसूस करते हैं, और आपका बिहेवियर वैसा ही होता है. और अभी मैं आपको बताऊंगी कि योगा और मेंटल हेल्थ कैसे साथ साथ चलते हैं, how effective they are together in your daily living, in your relationships and your physical health. Who needs therapy? Therapy किसको चाहिए? Therapy हम सबको चाहिए.
आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हम सबको चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव अ माइंड, है ना? वी ऑल हैव अ माइंड एंड वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ. यस, वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ. स्कूल से कॉलेज, कॉलेज के बाद अपना प्रोफेशन चूज करना, फिर जॉब में जाना, फिर एक मैरिड लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक लाइफ होती है बच्चों के साथ, एक लाइफ होती है आफ्टर रिटायरमेंट. इस सब में हमें बहुत जरूरी है दैट वी स्टे मेंटली सेम. क्यों नहीं रहता वो मानसिक संतुलन? क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, यू नो, पेंडुलम की तरह लटकते रहते हैं. ये करूं या ये करूं, इसको खुश रखूं या उसको खुश रखूं, मेरे बोलने से कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, मेरे घर का माहौल कैसा रहेगा, क्या मैं बोल पाती हूँ. हम एक घर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जॉइंट फैमिली में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, यू कैन नॉट इवन एक्सप्रेस योरसेल्फ. आप बोल भी नहीं पाते आपको क्या खाने में पसंद है क्या नहीं है. जो पक रहा है खा लो, जो बन रहा है वैसे ही रहो. हमारे घर में ऐसा होता है. थोड़े टाइम के लिए आप कोप करते हैं, यू नो, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता है हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स कम होने लगते हैं एंड देन देयर इज अ बर्नआउट. और जब बर्नआउट होता है हम थक जाते हैं, पहले मानसिक रूप से और फिर शारीरिक रूप से. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नीड थेरेपी इन आवर लाइफ सर्कल. अगर हमें कौन सा करियर लेना है, बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है, देयर इज ऑलवेज एंजाइटी. कैसे करें, यू नो, इट्स लाइक अ पेंडुलम, और वी फील लाइक अ बॉल इन अ रैटल. वो बच्चों का खिलौना नहीं होता है रैटल जिसमें आवाज आती है, उसमें छोटी सी बॉल होती है, और वी फील लाइक दैट बॉल. कोई आया, कुछ हुआ बाहर, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, माहौल ऐसे बना, सिचुएशन ऐसे बना, हम हिल गए. हम कोप अप नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हम अपना को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम डरते हैं. अगर मैंने बोला लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने बोला मेरे घर का माहौल कैसा हो जाएगा. ये सिर्फ विमेन को नहीं होता, मेन को भी होता है. मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली फॉर विमेन, इट इज फॉर मेन ऑल्सो. जितना विमेन को स्ट्रेस होता है उतना ही आदमियों को भी होता है. लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ऐसा स्टिग्मा है कि आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो स्ट्रेस लेते हैं. चाहे वर्क स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, हेल्थ स्ट्रेस हो, they don't speak, but we all need a platform where we can speak, where nobody judges us, where it is a neutral platform. So this Dumpito is like that, or therapy is like that. You know, therapy is such a beautiful way of expressing yourself through speaking. तो expression बहुत important है. सबको therapy चाहिए क्योंकि सबको decision making चाहिए. अगर हमारा पीस ऑफ माइंड नहीं है, हम डिसीजन मेकिंग राइट टाइम पे नहीं करते अपनी लाइफ में, तो क्या होता है, एक इम्बैलेंस हो जाता है. बॉडी में इम्बैलेंस, हमारे जो बॉडी का एक बैलेंस है वो हिल जाता है. और जब हमारी बॉडी का बैलेंस हिलता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी नींद गायब होती है, फिर हमारे खाने पे असर पड़ता है, फिर हमारे वेट पे असर पड़ता है, चाहे घटता है या बढ़ता है. और वेट के बाद एसिडिटी, गट इश्यूज होने लगते हैं, है ना. या तो साइलेंट एसिडिटी होती है या ओवर एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, सब कुछ. तो हमारा पूरा एक पूरा इक्विलिब्रियम हमारे शरीर से हिल जाता है. सो एवरीबडी नीड्स थेरेपी, एवरीबडी नीड्स थेरेपी. जो सिर्फ यहाँ से आप बोलो जो मेंटली वीक होते हैं, सिर्फ उनके लिए थेरेपी नहीं है, या किसी को कोई आईक्यू किसी का कम है, या कोई यू नो मेंटली चैलेंज हो, उसके लिए सिर्फ थेरेपी नहीं है. आज के टाइम पे थेरेपी इज फॉर एवरीवन. यू कैन बी अ प्रोफेशनल एंड यू कैन डू थेरेपी. यू कैन बी वर्किंग, यू कैन डू थेरेपी. आप एक हाउसवाइफ है, यू नीड थेरेपी. आप एक एडोलेसेंट हो, यंग हो, you can need therapy. So who needs therapy? If you have been through some trauma, or you're struggling to maintain and build healthy relationships with either yourself or people around you. Yeah, you're grieving loss of some near and dear one. Last 2 years have been very, very hard for everyone. Your physical health has taken a hit. या आप रोजमर्रा की एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं कर रहे, अपना लाइफ जो आप जीना चाहते हो, जैसे आप करना चाहते थे, यू नो लॉन्गर फाइंड इंटरेस्ट इन इट. यू फाइंड इट मंडेन, एवरीडे रूटीन. सुबह उठो, किचन में लग जाओ, या ऑफिस चले जाओ, वही बच्चों को देखो, घर साफ करो, या ऑफिस का काम कर रहे, यू डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. What then, you know, I will talk about certain things that we all are going through, or you would be knowing somebody who is going through these challenges.
Mostly we all go through in some part or the other in life, because we all have a mind, we all have feelings, we all have emotions. You know, mental health is not mental health कोई एज देख के या सेक्स देख के या फिर कास्ट या क्रीड या अपर क्लास मिडिल क्लास, इसका कोई वो नहीं है. Everybody has a mental health. So some of the things that we all are going through sometime or the other in life, let's first go about that what are we all going through but we don't speak. हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते. हम बात करते हैं तो किससे करते हैं? किसी फ्रेंड से कर ली या किसी रिश्तेदार से कर ली. वो क्या होता है ना, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपको. हो सकता है वो गाइड कर पाए, हो सकता है वो गाइड ना कर पाए, हो सकता है उनकी एक्सपीरियंसेस आपको यूजफुल हो सकता है आपको बिल्कुल यूजफुल ना हो. सो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू व्हाट आर द challenges that we face. Sleep disorder or insomnia, which is very very common these days. अगर आपको नींद नहीं आती है, discomfort while sleeping, overthinking, सोने से पहले बहुत टाइम लगता है सोने में, नींद ही नहीं आती, बेड में हिल रहे हैं, या रात को काफी मिडिल ऑफ द नाइट में उठ जाते हैं, सुबह उठ के भी फ्रेश फील नहीं करते, और काफी देर बेड में you are spending a lot of time in the bed. Body image, self image issues, confidence related issues, you are not sure of yourself, आपको अपने में इतनी confidence नहीं आती, you don't even like yourself, the way I look or the way I feel, you always compare yourself with other people. Sexuality related issues, योगा, इसमें बहुत मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है. योगा हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस. जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जो हैं जैसे हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, एंड आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ. जब आपको एक्सेप्टेंस आता है, चाहे आप स्ट्रेट हो, लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, थ्रू थेरेपी एंड स्पेशली थ्रू योगा, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट किया है. एंड थेरेपी के थ्रू सिर्फ उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उनकी फैमिलीज, relatives and societies also accepted them. So it helps in self-acceptance. Anger management issues, we all have anger management. Therapy तो बहुत help करती है because it works on the thought process. But in anger management, yoga plays a very important role. आपकी जो सोच होती है, जो आपकी breath होती है, वो एक जगह केंद्रित करती है. You live in the present moment. It gets you in the present moment. So बहुत सारे clients हैं जिनको anger management issues होती हैं. I always suggest them with therapy, with thought correction, you must join yoga circles. This will help you to keep you in balance with your thought processes and your emotions. Pregnancy related issues, ये एक बहुत बड़ा है taboo. अभी भी लोग इसको मानते नहीं हैं. Postpartum depression, postpartum anxiety, जो सबको ladies को होती है mostly after pregnancy, pregnancy related anxiety, post and pre, and hormonal issues. This is a tough time, but are we ready to speak about it? क्या हम अपने घर में बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा अपने बारे में? No, it is a taboo. Women cannot speak, they feel depressed. उससे उनकी लैक्टेशन पे भी बहुत असर पड़ता है, जिस तरह से वो अपने बच्चे से बॉन्ड करती है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. बट क्या हम चीजों के बारे में बात करते हैं? नहीं. हम क्या कहते हैं, हम सब अपने बच्चे पे आ रहे हैं, तुमने तो एक या दो किया, मैं तो 5 बच्चे किए हैं. लेकिन these issues are to be addressed, because when they are addressed, you can raise up yourself and your children in a much more effective manner. Time management. Time management एक बहुत बड़ा अपने में ही है एक प्रॉब्लम. लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, करना चाहते हैं बहुत लाइफ में कुछ, लेकिन कर नहीं पाते. कब सुबह से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, और फिर अगले डे के टू डू लिस्ट बनाते हैं हम क्या करेंगे. Therapy plays a very important role with yoga in time management, in scheduling and micromanaging, because when your thoughts are in control and micromanaged, through working on yourself, on your breath, on your posture, on your body language, अपने आप टाइम मैनेज कर पाते हैं या टाइम मैनेजमेंट हो जाता है. कभी कभी स्ट्रेस की वजह से या हमारे माहौल की वजह से ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज भी लोग करते हैं, और इससे डिपेंडेंसी होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम होती है. मोस्टली which most of us are going through, I will just very quickly, depression and anxiety. Depression and anxiety आजकल सबको हो रहा है.
हर किसी को, everybody is going through. And what is depression? Let's see उसमें होता क्या हमारी फीलिंग्स के साथ. जब हम किसी को बोलता है you depressed, वो कहते हैं no, I am not depressed, I am okay, I am coping. Let's see कि डिप्रेशन में ऐसे कौन कौन सी फीलिंग्स है जो रिकरेंट आती हैं, जो बार बार आती हैं. ब्रेन फॉगिंग, कोविड के बाद स्पेशली ब्रेन नम्बनेस, क्राइंग, एकदम से रोना आ जाता, अकेले बैठे हो या ग्रुप ऑफ पीपल, थकावट, नेगेटिव सेल्फ थॉट, सेल्फ टॉक, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं और अपने आप से भी नेगेटिव बोलते हैं. चेंज इन एपेटाइट और इंक्लूडिंग कंफर्ट फूड. टू मेक अस फील गुड we look for comfort food, junk eating, binge eating, pizza, burger, or a lot of high sugar related food. Oversleeping or undersleeping, weight loss or weight gain. अगर ये आपके साथ एक रिकरेंट साइकिल में हो रहा है या आप किसी को जानते हैं उनके साथ हो रहा है, they are definitely depressed. They need help. They definitely need to talk to someone. What does yoga do to the brain and mind? यहाँ पे योगा का क्या रोल होता है? Yoga lowers the stress hormones in our body and it induces the happy hormones in our body like the dopamine, the endorphins, the oxytocin and serotonin. जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं योगा के थ्रू, अपने आप ही स्टार्ट फीलिंग गुड. बट योगा करने के लिए यू नीड मोटिवेशन, और मोटिवेशन आपको थेरेपी से मिलेगी. यू नो, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होता है ना, हम करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, होता नहीं, रूटीन नहीं बन पाती, स्केड्यूल नहीं बन पाता. 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन वही आलसपना हो जाता है या लेथार्जी चले जाते हैं. करना चाहते हैं, हम ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं लेकिन होता नहीं है. उसके लिए थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी और आप थेरेपी और योगा इकट्ठे करेंगे, सो यू कैन सी the benefits are multifold. Also, sometimes relationships also make us very depressed or lead to anxiety. Like यहाँ पे जो लिखी हुई हैं चीजें, like breakup, live-in, divorce, single, eating disorders, ये भी stress की वजह से होता है. When we are stressed, mood swings, irritability, unhappiness, swinging like a pendulum, हमें मालूम ही नहीं चलता, हमारा पैटर्न बन जाता है चिड़चिड़ाहटपन का. एंजाइटी, जैसे मैं बोल रही थी, एंजाइटी 3 चीजों में होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल. सो कई कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी है: पाउंडिंग ऑफ द हार्ट, स्वेटिंग, नोजिया, इरिटेबिलिटी, माइंड रेसिंग, अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कैन नॉट स्लीप. बट when we do yoga or any kind of physical activity, what happens? The feel good hormones are induced in our body, and when they are used in our body, they help us to overcome all these issues. And therapy motivates us to be continuous, to be regular. एक बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी होना. जब कंटिन्यूटी किसी भी चीज की टूट जाती है तो रिजल्ट्स नहीं मिलते. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी मिले, कोई आपको मोटिवेट करने वाला हो जो न्यूट्रल पर्सन हो. गट इश्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीड टू एंजाइटी. यू नो, पूप हाइजीन. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं बहुत एंशियस हैं हम, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया कि उनकी एंजाइटी उनके पूप या एसिडिटी से रिलेटेड होती थी और उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि इतने सालों से वो एसिडिक है. उनको यही पता, यही लाइफ है, गोली खाओ और काम पे जाओ. गोली खाने से सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है. वो डिस्कम्फर्ट में इतने टाइम से रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कंफर्ट क्या है. So when we started doing therapy and started talking to them, when the thought process was aligned, and when they started having, you know, a poop hygiene, जब वो सुबह उठ के वॉशरूम जाने लगे और उनका दिन बहुत अच्छा शुरू होने लगा, तो उनकी एंजाइटी अपने आप कम होने लग गई. Other benefits of yoga है breathing and meditation relaxes us. हमें फोकस देता है योगा. हम योगा is now in the present moment, ना तो पास्ट ना फ्यूचर. योगा हमारे प्रेजेंट, अभी से कनेक्ट करता है. जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपको बहुत फोकस रहता है. The 4 pillars of holistic wellness are attitude, exercise, rest and nourishment. But today we will only focus on attitude and exercise. Attitude, yes, it's important to have a positive attitude, but not all the time. It's not possible.
and not to have a negative attitude also. Have a neutral attitude. Neutral attitude is love, empathy, and compassion. When we have a neutral attitude, we are in this zone. The irrational thoughts that lead to anxiety, stress, depression, other things reduce, and our rational thoughts go up. Exercise. What better way to exercise than yoga? It is so holistic, so important. You know, it grounds you. Yoga में बहुत सारी grounding exercises हैं जो आज के mental health को deal करने के लिए बहुत बहुत important है. See, stretching, benefits of stretching, muscle tone, endurance, and strength. So yoga is helping us to do this. Consistency in the body. जब आपकी body में flexibility आती है, आपकी सोच में भी flexibility और clarity आती है. So they are interrelated. You know, yoga and mental health go hand in hand. See, we only live once, friends, and it's very important that we stay young, go outdoor, we have a great posture for our self-esteem and confidence, and align with the nature. Mother Earth is so beautiful. We don't need to do anything, just be aligned with the nature. And yoga helps us to do that in many ways, in many ways. And let's make it more enjoyable. इसको एक रोजमर्रा की रूटीन ना बना के योगा को enjoyable बनाए. जैसे बच्चे कैसे करते हैं ना, इधर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, किधर भी डांस कर लेते हैं. So let's make yoga more fun, more enjoyable, and make it a part of our everyday life. आप योगा कैसे भी कर सकते हैं. You can do it alone, you can do it with friends, you can go out and do it, you can do it with family. It bonds you. Emotional connect आपको मिलता है. आजकल bonding कितनी जरूरत है. टाइम नहीं है लोगों के पास, भाग रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है. आप अगर एक कोई योगा सर्कल ज्वाइन करते हैं या अपना योगा रूटीन बनाते, it will help you to bond with yourself, people around you, your own children, like a 70-year-old and a 2-year-old, a grandfather and a grandchild. They're practicing together in their own ways. Family bonding होती है, emotional bonding होती है. फ्रेंड्स के साथ, यू नो, आई ऑलवेज फील कि आप हर चीज मजे से करें, इंजॉयमेंट करके. एक नया मैट खरीदें, अच्छे कपड़े पहन के करें, खुश रह के करें, अच्छी वाटर बॉटल रखें साथ में. ये चीजें हमें एक्साइट करती हैं. एंड स्टडीज हैव फाउंड दैट 12 वीक्स ऑफ योगा लीड टू हायर लेवल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी. सी, इट हेल्प्स, it gives us higher level of antioxidants to cope up with different diseases. It's so beautiful. And it's like this fresh antioxidants, when the fresh part is there in this apple, when you do yoga. And when you don't do yoga, this is what happens to you. There's this decompose in the body that happens. We don't even come to know. It happens at a cellular level. अगर हम किसी चीज को खुशी से enjoy करके देखें तो हमारा cellular level भी अच्छा हो जाता है. Did you know that yoga also strengthens our immunity system? So yoga के बहुत 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 benefits हैं. And it is one of the most simplest things to do. And एक खुशखबरी है that yoga can be added into a list of natural antioxidants. We don't have to depend on blueberries or chocolates anymore. So I would now just, you know, like to submit all that to have a good mental health, you definitely need a therapist, but yoga can motivate you, a therapist who can motivate you, guide you, and take you towards yoga. So roll out your mats and do some yoga every day. So let's put our hands up and stretch ourselves wherever we are to promote yoga, because it's so important for our health, for people around us, for everybody to have a good mental health. And I'm always there to guide, to know if you need any kind of information, if you need any kind of motivation, if you are stuck in a daily rut, ये करना चाहते हैं, होता नहीं है, क्योंकि योगा के बारे में सब जानते हैं, पढ़ते हैं, बट द क्वेश्चन है क्या हम कर रहे हैं, अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि हम योगा करें. तो एक 21 डेज का चैलेंज होता है जो यूजुअली मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ. 21 डेज एक मैजिक नंबर होता है. तो अगर हम 21 दिन तक कुछ रोज करें तो हमारी बॉडी उसको एक हैबिट, एक रूटीन बन जाती है. सो लेट्स प्रैक्टिस योगा, लेट्स प्रमोट योगा, let's promote good mental health for everyone so that we all as a society benefit, stay happy, stay young, and always support each other. And that gets me to the end of my presentation.
So every day, roll out your mats. If you don't have, buy new mats. Get into a social circle. Get hold of professionals who can teach you. This is a beautiful way to heal yourself. And I'm always there. And in case you need to ask any questions, you want to know more, feel free to do it right away. So anybody, any question to be? Indrajit ji, please come in. Indrajit ji, are you there? Yeah, there is Dilmaya. She's there. She has to ask a question, ma'am. Yeah, Dilmaya, please. Yes, Palka ma'am, please आप screen share stop करेंगे? Yeah, sure. Now is it okay? Yes, ma'am. Thank you. Yes. Yes, I think so. She's. अब आप Ma'am, unmute कर सकते हैं. May I ask a question? May I ask a question? Yes, sir. Please नाम बताएंगे sir, मैं आपको spotlight में लेंगी. My question is, what is the incidence of instances of requirement of professional help for people who are otherwise mentally healthy? For example, so many people who are mentally ill never commit suicide, but some people who appeared until yesterday to be hale and hearty, is perfectly fit, doing well in their profession, they at times commit suicide because of some certain provocation. So to what extent is the concept of mental health relevant even for people who are happy, hale and hearty today? Thank you. Could you please repeat? I could not understand your question because slowly. Sir, your voice is not audible. Yes. Can you hear me now? Yes, a little slowly if you could make. I'll speak a bit slowly. My question was, to what extent is the concept of mental health relevant even for people who appear to be well adjusted in life, doing well in their profession, happy in their family life? Because as I said, there are so many mental patients, but most of them never commit suicide. On the contrary, so many people who appear to be hale and hearty, doing well, successful in their profession, happy in their family life, well adjusted, sometimes because of some certain provocation, some certain anxiety, some development in their life, take their own life, which is an extreme form of mental ill health, I'm sure. So I would like to know how people who are already healthy can also remain watchful about any chances of decline, or how they can seek professional help in case they have some disorder. Okay, thank you so much for the question. It's a very relevant question. एक बहुत ही अच्छा question है, क्योंकि physically जो दिखने में healthy होता है, ऐसा नहीं है कि मानसिक तौर पे they are healthy. What happens? There are a lot of cognitive distortions, our thought processes. You must be physically looking very good. आपका job भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपका family life भी अच्छा है. Something is bothering you because you're not able to express yourself. There are thought errors. There's a distortion in your thought error, and you continue to believe those things and you make them your reality, your truth. आप उसमें से बाहर नहीं आ पाते. आप because you don't know how to express yourself. Thus, when you don't know how to express, you feel that suicide is the best way, or self-harm, or self-hurt. Physically, you would be healthy. There is no problem with you physically, but mentally, you're not able to express yourself. There are cognitive distortions. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को साइको एजुकेट करें. जब आपको घर में ऐसा लगे कि कोई बहुत चुप हो गया हो या बहुत ज्यादा बोलने लग गया हो या एक्टिविटीज उसकी डिफरेंट हो रही है जैसे होनी चाहिए, या they are not okay, they are not expressing themselves, please show them to a therapist. सिर्फ घर में बात ना करें कि हम घर में बात कर लें, रिश्तेदारों से बात कर लें या पिक्चर दिखाने चले जाएं. यू नो, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस हम करते हैं. शॉपिंग चले जाएं, खाना खा लें, कपड़े खरीद लें या किसी वेकेशन पे चले जाएं. वो काम ना करें. इससे अच्छा आप किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें जो उससे बात कर सके.
उससे पूछ सके what is the problem, so that we can prevent self harm like suicide. So psychoeducation plays a very, very important role over here, because we may smile, we may look, we are healthy, we may do every day our routines, but mentally we are very, very unhappy. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है, तो please help that person, get them to a therapist right away. Hi, Palka. Could I ask you the second question? Hi, my name is Puneet. I just wanted to know that once the client starts visiting the therapist, do they become dependent on the therapies? Are therapies addictive? Like once you are on them, then you want to go back. Is it true? No, this is a myth. This is a myth. Okay. It is going to be you are dependent on your therapist. Lifelong dependency is on a therapist. No, we have a planned program. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो medicines, it's not that medicine all the time. You have an infection, you complete the course, you become all right. Similarly with therapy, therapy is for that duration of time, and in therapy, consistency and regularity is very important. You know, so it's for a duration of time. When you start feeling better, work closure of therapy, and it is done in a very systematic way. When the closure happens, you know that now I'm okay to work all by myself. So there is no dependency. The therapist psychoeducates you, and the main aim of the therapist is to make the client self-dependent. So therapy is not just about talking and venting out emotions. We are psychoeducating, we are learning how to manage our thoughts, emotions, and behavior, so that whatever error has happened over a period of time, whether it is a negative self-thought or the depressive thoughts or the anxious thoughts or feeling stifled, you know, over a period of time all this happens. It doesn't happen overnight. So there's a distortion in our thoughts. So when we rectify that with therapy, then we move towards closure of therapy. And post that, from the therapist side, whenever the client wants, he can come. There are no hard and fast rules of that you have to come and meet the therapist. But while therapy is going on, consistency and regularity is very important. It is not once in a while. It is consistent and it is regular. Okay. Do you have a process where you monitor your client once they're all right and they're gone, and like a maintenance program or something? Yes, we have real-time therapy. And therapy is that you come and you meet, and one is real-time therapy, that you stay in touch with your therapist over WhatsApp or call, and whenever you feel that things are not going right, there and then you throw her a message, and she is there to reply you there and then. So we come to know that, okay, you are doing well, This is known as real-time therapy. All right. Thank you. Thank you. You're most welcome. There are two more people to ask the question. Palka ma'am, and I think so we should hand over to Dilmaya first. Good evening, Palika ma'am. Yes. Sorry. Good evening, everyone. She is Palka ma'am. Palka ma'am, sorry. Ma'am, बहुत ही अच्छा वंडरफुल सेशन रहा, बहुत ही यूजफुल। आजकल आज के सिनेरियो को देखते हुए बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक था। तो एक मेरा क्वेश्चन है, हाउ इज थेरेपी और टेकिंग काउंसलिंग फ्रॉम speaking with friends or family or some experienced person? So see, therapy, how is therapy different from talking to friends and family? है ना, ये आपका क्वेश्चन है ना? जी मैम। देखिए, जब हम अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करते हैं, या किसी एक्सपीरियंस एजुकेशन से, या जो बहुत जिन्होंने जिंदगी देखी है, कोई बहुत बड़े उम्र का है, वो आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो उनके साथ हुआ है, जैसे उन्होंने किया, but वो experiences may or may not have any importance in your life. Times have changed. Therapy is something that is rational,
it is scientific. So हम यहाँ पे अपने experiences शेयर नहीं करते. जो चीज लॉजिकल है, जो रैशनल है, जो साइंटिफिक है, जो प्रूवन है कि हमारे थॉट्स कैसे फंक्शन करते हैं, हमारे थॉट्स कैसे बदल जाते हैं या उनमें कुछ एरर आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से, सर्टेन लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से, हम उस पे फोकस करते हैं, करेक्शन पे. जब हम किसी से बात करते हैं उससे हमारा सिर्फ दिल हल्का होता है. वी मे फाइंड अ सोल्यूशन, वी मे नॉट फाइंड अ सोल्यूशन. Therapy is very solution oriented, focused to your comfort zone. जो आप कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते, हम उस पे फोकस करते हैं कि पहले तो आप अपने से पहले कंफर्टेबल होए वो चीज करने के लिए. क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग. नहीं तो आप हमेशा पेंडुलम की तरह झूठे, वो ऐसा कह रहा है, उसने ऐसा बोला, उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने ऐसा किया. We cannot base our life on others' experiences. सबके अलग एक्सपीरियंसेस है. जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं है, और जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं है. So therapy आपको उसमें हेल्प करता है. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. So thank you so much, Ilmaya. And the next question is from Sunita ji now. Hello, ma'am. You're not able to unmute yourself, Sunita ji. I think so. She's having an issue in unmuting herself. You can ask Suneet ji till then. She can put up her question and then we can go back to Sunita ji. She's not able to unmute, ma'am. Rashna ji. Hello. Unmute नहीं हो रहा है इनका. Yes, yes. हाँ जी. नमस्ते, मैं सुनीता. हेलो पलका मैम. Hello. हेलो मैम. एक्चुअली मेरा सवाल जो है वो ये है कि बेसिकली हम, जैसे कि आपने बताया कि मोस्टली जो डिप्रेस हो जाते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो पर्सन डिप्रेस है, और व्हेन इज द राइट टाइम टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट? When you are not comfortable with yourself, when you are unhappy, when you are not able to express, आपको रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें रुचि नहीं आ रही, when you feel like कि आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, हमें पता चल जाता है खाने पीने में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है. और जैसे मैंने आपको डिप्रेशन की कई फीलिंग्स दिखाई है ना, फीलिंग्स आती है. व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज अबाउट फीलिंग्स. जैसे फिजिकल हेल्थ होती है उसमें हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बुखार है, माथा गर्म है, सिम्टम. फिजिकल हेल्थ, ऐसी मेंटल हेल्थ में हमारी फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस होते हैं. व्हेन दे आर नॉट अलाइन्ड विद आवरसेल्व्स, नाउ इट इज टाइम टू गो एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प. जब आप खुद से नहीं मोटिवेट कर पा रहे अपने आप को, जब आपसे खुद नहीं हो रहे, रोज उठना, रोज एक हाइजीन, अपने आप को तैयार करना, नहाना, वही बहुत बड़ी बात हो रही है, या घर के काम करना, या अपने वर्क को सस्टेन करना, अपने करियर को या पढ़ाई को, जब आप नहीं कर पा रहे रोज गोल्स बनाने के बाद भी, यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग. आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, ये सबको पता चल जाता है फीलिंग. दैट इज टाइम टू सीक हेल्प, to go and talk to a professional, to a therapist. I need help. The therapist will only guide you from the irrational to the rational way, in a very scientific manner. To help you, to benefit you, start seeing the noticing. So तब आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है when you are feeling these things. लेकिन क्या है ना, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि कहते हैं these are normal, ऐसी जिंदगी चलती है, हमने तो इतनी जिंदगी निकाल दी. बट दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल. जैसे जिसको एसिडिटी होती है उसको वही लाइफ पता चलती है, बीइंग इन डिस्कम्फर्ट. बट देयर इज अ लाइफ इन कंफर्ट आल्सो व्हिच मेक्स अस मच मोर हैप्पी, सक्सेसफुल एंड हेल्प्स अस टुवर्ड्स आवर गोल. सो व्हेन यू आर रेडी टू मूव फ्रॉम डिस्कम्फर्ट टू कंफर्ट, therapy helps you to know the difference. Okay, thank you ma'am. Ma'am, there is, I think so, Ashwini ji, who has asked you the question related to the society. He has one more question. Would you please
clarify that also for him. Okay, I have one more brief question. Is it correct that suicide rate among doctors is higher in the general population? Yeah, he's the same one, same person. Because they are also humans, na? Doctors are also humans. Stress तो सबको होता है ना अश्विनी जी? और आप अगर cope up just because you're a doctor, क्या आपको stress नहीं होगा? और जब अपनी feelings को express ही नहीं कर पा रहे, what will you do? चाहे वो doctor हो या engineer हो या lawyer हो या housewife हो, चाहे बच्चा हो, जब आपको कोई medium नहीं मिलता and there is so much pain, what will you do? You will self harm. आपको लगेगा हो सकता है उससे मुझे कुछ आराम मिले and you are ready to take that extreme step. So it's not that only doctors or psychiatrists or this mental health has nothing to do with profession. It's about how effectively you are able to deal with stress. How are you able to cope up, coping mechanisms. जब आपका burnout हो जाता है life में, तब आप ऐसे steps लेते हैं. So we all are humans. Doctors are also humans. It is but natural. They also have a mental health because they have a mind. Anybody else? Now, here we conclude the session now. So I just end the session and thank you so much, Palkaji, for giving us such a prestigious time in highlighting this topic. It's been so wonderful how you have related yoga and how through yoga we can clear our mental maladies, whatever the phases we have. And I just wanted to say how you have also bring our regular issues which we are facing, घर की ही चीजों को, how nicely you have described the issues with the family, घर में maid के साथ, and how we are not taking it out with everyday issues that we are facing. And you have done that so nicely, so beautifully, and again motivated us a lot. So on the behalf of my WHRF team study circle, I thank you so much for its team presence and for appreciate your insight, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And very thank you so much. and clear. Yes, thank you so much. Right. And I'm always and also want to specify, please crisp and clear also. Yes, please feel free to connect. It is very, very confidential. Yeah. And you know, you will feel